Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, word, mail merge. Let's know about exploring mail merge, envelopes, labels. Mail merge is a feature of Word that helps in sending the same letter to a number of people. Using mail merge, you can create personalized letters, envelopes, labels, name tags, email messages and directories. मेल मर्ज आपका वर्ड का एक फीचर है जिसकी हेल्प से आप सेम लेटर को बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं. द मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स: क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स, मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स. देखिए मेल मर्ज का जो प्रोसेस है उसमें आपके 3 स्टेप्स है. नंबर 1 मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, देन डेटा सोर्स क्रिएट करना एंड main document and data source को merge करना. For example, in a form letter, your main document would be the letter informing the parents to be called for a parent-teacher meeting. The data source is where the fields of information on each parent receiving the letter are located. The data source would contain names, addresses, phone numbers, etc. फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म लेटर है जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पेरेंट्स के लेटर लिखा जाएगा दैट की पेरेंट टीचर मीटिंग है, राइट. अब डेटा सोर्स है आपका कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपके फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, हर पेरेंट को जो लेटर रिसीव हो रहा है वो लोकेट होंगे. तो जो डेटा सोर्स है उसमें नेम होगा, एड्रेस होगा एंड फोन नंबर्स होंगे. In this process, the main document is linked to the data source by common fields of data called merge fields to get output documents. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट को लिंक कर देते हैं डेटा सोर्स के साथ, किसी कॉमन फील्ड ऑफ डेटा के साथ, जिसे कहते हैं merge fields. If you are printing envelopes or address labels, the main document would be the envelopes or the sheet with labels on it. The data source would be the addresses that are to be placed on these envelopes or labels or sheets. अगर आप कोई एनवलप प्रिंट कर रहे हैं या फिर कोई एड्रेस लेबल है, जो मेन डॉक्यूमेंट का आपका क्या होगा, वो आपका एनवलप होगा या फिर वो शीट होगी जिसमें वो लेबल्स होंगे. तो डेटा सोर्स में क्या होगा, आपके जो एड्रेसेस होंगे जो कि प्लेस करने हैं उन एनवलप्स पे या फिर उन शीट्स के लेबल्स पे. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज, यू विल नीड अ वर्ड डॉक्यूमेंट. यू कैन स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग वन और क्रिएट अ न्यू वन एंड अ रेसिपिएंट लिस्ट व्हिच इज टिपिकली इन एक्सेल वर्कबुक. तो जब आप मेल मर्ज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. आप चाहे तो जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई नया क्रिएट कर सकते हैं. Exploring mail merge. Open an existing Word document or create a new one. Click the mailing tabs. Click the Start Mail Merge command. Select Step by Step Mail Merge Wizard. तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, Word document ओपन करना है. देन आपके पास आएगा Mailings tab एंड देन उसमें आप करेंगे Start Mail Merge एंड देन Step by Step Mail Merge Wizard. No more. A data source file can be of many forms such as an Excel, a database or even another Word document that has a table in it. देखिए आपकी जो डेटा सोर्स फाइल है वो कई सारी फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि आपकी एक्सेल है या फिर डेटाबेस है या फिर कोई दूसरा वर्ड डॉक्यूमेंट है. The mail merge task pane appears and will guide you through the 6 main steps to complete a merge. The following is an example of how to create a form letter and merge the letter with the recipient list. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से merge किया जाएगा लेटर को एंड उसके बाद recipient list के साथ. चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले choose the type of document you want to create. In this example, select letters. Click next. Starting document to move to step 2. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे letters पे, then next starting document. Step 2. Select use the current document and then next select recipients. चलिए देखते हैं. next है आपका use the current document and next is select recipient. Now step 3. Now you will need an address list so Word can automatically place each address into the document. The list can be in an existing file or you can type a new address list from within the mail merge wizard. From the mail merge task pane, select use an existing list and then click browse. Locate your file in the dialog box. You may have to navigate to a different folder, then click open. If the address list is an Excel workbook, select the worksheet that contains the list and then click OK. In the Mail Merge Recipients dialog box, you can check or uncheck each recipient to control which ones are used in the merge. When you are done, click OK to close the dialog box.
From the mail merge task pane, click next, write your letter to move to step 4. चलिए देखते हैं. सबसे पहला आपका use an existing list, then browse, then आप file search करेंगे and then open and then OK. इसके बाद आप list check करेंगे and then OK and then next write your letter and उसके बाद हम step 4 की तरफ बढ़ेंगे. Step 4. Now you are ready to write your letter. When it is printed, each copy of the letter will be seen, except the recipient data like the name and address will be different on each one. You will need to add placeholders for the recipient data so mail merge knows exactly where to add the data. To insert a recipient data, place the insertion point in the document where you want the information to appear. Select address book, greeting line, electronic postage or more items from the task pane. Depending on your selection, a dialog box may appear with various options. Select the desired options, then click OK. A placeholder appears in your document, for example, address block. Repeat these steps each time you need to enter information from your data record. From the mail merge task pane, click next, preview your letters to move to step 5. For some letters, you will only need to add an address block and greeting line. Sometimes, however, you may want to place recipient data within the body of the letter to further personalize it. No more. The mail merge file will hold special symbols which will substitute the names and address and other relevant information stored in the data file. देखिए आपका जो मेल मर्ज फाइल होगा उसमें स्पेशल सिंबल्स होंगे जो कि सब्स्टिट्यूट करेंगे नेम या फिर एड्रेस को या कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो डेटा फाइल में स्टोर्ड है. चलिए स्टेप 4 करके देखते हैं. सबसे पहले आप लेटर टाइप करेंगे, देन एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस चूज करेंगे, ओके, देन आपका ग्रीटिंग लाइन एंड देन ओके एंड देन इसके बाद नेक्स्ट, प्रीव्यू योर लेटर्स. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. स्टेप 5. Preview the letters to make sure information from the recipient list appears correctly in the letter. You can use the left and right scroll arrows to view each document. Click next, complete the merge to move to step 6. चलिए अब आपने लेटर टाइप किया था, देन आपका नेक्स्ट होगा, सबसे पहले आप प्रीव्यू करेंगे लेटर को और उसके बाद नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ. क्लिक प्रिंट टू प्रिंट द लेटर्स. द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स opens. Click all, then click OK. The print dialog box will appear. Adjust the print settings if needed, then click OK. चलिए अब स्टेप 6 करते हैं. सबसे पहले प्रिंट, देन ऑल एंड ओके एंड इसके बाद ओके और इस तरह से आपका लेटर प्रिंट हो जाएगा. No more. Mail merge is sometimes also called as print merge. Mail merge को कई बार print merge भी कहा जाता है. Next is envelopes. There are times when you may need to print several envelopes that have the same delivery address, or you may need to keep an envelope on file for future use. The developers at Word provide the capability to add an envelope to your current document, but not to create a new document that contains just an envelope. देखिए कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे एनवलप्स की ज़रूरत होती है जिसमें सेम डिलीवरी एड्रेस होता है, या फिर हम उसे रख सकते हैं एनवलप को फाइल में हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए. तो जो डेवलपर्स हैं आपके वर्ड में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कैपेबिलिटी टू ऐड एन एनवलप. आपके करंट डॉक्यूमेंट के साथ वो आपका ऐड ऑन हो जाएगा, बट नॉट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक एनवलप होगा. Let us see how to create and use envelopes. Open an existing document that contains the address you want to use on your envelope. Highlight the address and copy it to the clipboard by pressing Ctrl+C. Create a new document. Display the mailings tab of the ribbon. Click Envelopes in the Create group. Word displays the envelopes in Labels dialog box. Make sure the Envelopes tab is selected. Place the insertion point in the delivery address area. Press Ctrl+V to paste the address you copied in step 2. Using the options button, you can change the orientation and formatting and click on the Add to Document button. Your envelope is ready and it can be saved and printed. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम इसे Ctrl+C से कॉपी करेंगे. देन आपका आएगा न्यू डॉक्यूमेंट एंड इसके बाद आप मेलिंग टैब्स में जाएंगे.
एनवेलप्स में जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे एनवेलप सिलेक्टेड है या नहीं, देन डिलीवरी एड्रेस में आप Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो अपनी ओरिएंटेशन और फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं एंड देन ऐड टू डॉक्यूमेंट। Next is labels. In the mailing tabs, the labels feature can also be found. There are two types of labels you can print. One is pages of labels containing the same address and pages of labels where each labels contain a different address. अब देखिए labels भी आपके दो तरह के हैं, एक तो pages of label जिसमें same address होगा और एक pages of label जहाँ पे label हर label में आपका different address होगा. Labels with the same address. Open Word and click Mailings tab on the ribbon, then click Labels. In the print section of the labels window, note the print button at the bottom shows full page of the same label. Click the options button at the bottom of the window, select the product number from the list and click OK. On the labels window, type the address in the address box. To change font properties, highlight the address, right click and click Font. Make your changes and click OK. Still on the labels window, click the new document button at the bottom. A Word document will appear containing the labels. Your labels with same address are ready and it can be saved and printed. चलिए सबसे पहले हम Word पे जाएंगे, then आपका Mailing tabs, then Mailing tabs के बाद आपका आएगा Labels, then full page of the same label, Options, then Product number and then OK. इसके बाद आपका Address, for example आपका Address है Delhi. ओके अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए एड्रेस आपने टाइप किया, देन आप करेंगे इसमें, अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है आप कोई भी इसमें से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, देन ओके एंड देन आपका न्यू डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज लेबल्स विद डिफरेंट एड्रेसेस. फर्स्ट you will create the list of different addresses, so open a new blank document and click Mailing tabs on the ribbon. Next, click Select Recipients in the Start Mail, Merge Group and choose Type a New List. Enter new addresses for Address List. Next, press OK and save the list to desktop. Click Start Mail Merge and click Labels. Select the product number from the list and click OK. Next, click Select Recipients and choose Use an Existing List and select the address file which you have prepared. Click Open button. Now type 2 in the label and click on Mailings tab. Insert Merge fields, then title. Repeat this step to insert other fields like first name, last name. Now copy these inserted fields to other labels after next record. Finally, your window should be as below. Now click on Preview Results button. Your labels with different addresses are ready. Save this document. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम जाएंगे मेलिंग्स पे, देन आपका सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट एंड अब हम यहाँ पे एक लिस्ट टाइप करेंगे. चलिए न्यू एड्रेस लिस्ट टाइप हो चुकी है. इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे. इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, देन लेबल्स, देन प्रोडक्ट नंबर एंड देन ओके. चलिए अब हम जाएंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन डॉक्यूमेंट से आप कोई भी फाइल निकालेंगे एंड देन उसे ओपन करेंगे. ओके, नाउ टाइप TO2. देन इसके बाद आप जाएंगे मेलिंग टैब्स पे, देन इंसर्ट मर्ज फील्ड, देन टाइटल. अब आप इस स्टेप को रिपीट करेंगे फिर से, जैसे कि आपके इंसर्ट करेंगे आप कोई भी फील्ड जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन उसे कॉपी करेंगे. फाइनली योर विंडो शुड बी एज बिलो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स पे. अब देखिए आपके जो लेबल्स हैं डिफरेंट एड्रेस के साथ रेडी हैं और आप अब इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. क्विक रिव्यू. Mail merge is a feature of Word that helps in sending same letter to number of people. Personalized letters, envelopes, labels, name tags, email messages and directories can be created using mail merge. देखिए मेल मर्ज ऐसा फीचर है वर्ड का जिसमें आप बहुत सारे लोगों को सेम लेटर भेज सकते हैं. The data source contains field of information such as names, addresses, phone numbers, etc. In the mailing tabs, the envelopes and label features can be found in the same place. There are two types of labels you can print. Pages of labels containing the same address, pages of labels where each label contains a different address. देखिए आपके दो तरह के labels होते हैं, pages of label जिसमें same address हो और एक जिसमें आपके different address होते हैं. So children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. इसकी practice अब आप खुद से करेंगे.